किशन भैया। इधर ज़रा हाँ देख लीजिए। बैठिए। आपका नाम किशन है, अपने बारे में बताइए। My name is Kishan Ajay. I am 18 years old. I am pursuing NDA. I have passed class 12 from Sri Krishna Inter College with 90% marks under UP board. अच्छा अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? I belong to Chandauli in Uttar Pradesh. अच्छा, अपने चंदौली के बारे में कुछ बताइएगा। Chandauli famous for farming and cattle farming, and most famous for chilies farming, especially चीनी in some फार्म। farming, अच्छा some area. ठीक है। और कुछ नहीं होता आपके चंदौली के बारे में, बस फार्मिंग ही होती है? और small businesses like soil water and like this. अच्छा, आपके चंदौली के आसपास किसी फेमस सिटी का नाम बताइए। Banaras. बनारस। बनारस के बारे में बताइए, क्या है बनारस? Banaras is famous for his huge culture. He is eldest city of the India. So बनारस का भी फॉर्मल नेम क्या है, ऑफिशियल नेम? Varanasi. वाराणसी। वाराणसी नाम कब पड़ा था, इसके बारे में आपको जानकारी है? अच्छा ठीक है। आप अपने गांव के बारे में बताइए। आपके गांव का नाम आपने? My village name is Devana. देवना। It's a small village in Chandauli. He located from Banaras, 50 km east from Banaras. ओके। So my village area is 40 km square with 1200 people, and my village main income is farming and cattle farming. कैटल फार्मिंग। अच्छा, और आपके कैटल फार्मिंग या फिर फार्मिंग के अलावा आप आपके गांव में दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है? Other source of income is soil water. सॉइल वाटर के बारे में बताइए। A small family makes soil pots for Diwali, for puja event, worship. अदर फेस्टिवल्स। Yeah. सॉइल वाटर्स के बारे में कुछ इक्विपमेंट्स के नाम बताइए, जैसे यूटेंसिल्स के नाम, बर्तन के नाम कौन कौन से होते हैं? Making जो what? छोटे छोटे होते हैं बर्तन, मिट्टी के बर्तन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो उसमें से किसी I do not know in English. हिंदी में बता सकते हैं? Purva and Gujjara, Hadiya, Bari, Diya. ठीक, ओके। आपको इसको इंग्लिश के नॉलेज में रखनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि वो आपके गांव का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, फार्मिंग और सॉइल Farming, cattle farming, कैटल फार्मिंग। main source of. ये भी एक प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपके गांव में मार्केटिंग की क्या व्यवस्था है, कैसे मार्केट में आना जाना, क्या है इसकी? We have road or market is 1 year far from our village. 1 किलोमीटर? 1 km. ओके। तो कैसा मार्केट है, क्या है उसके बारे में? A small market for necessary things. अच्छा, मतलब कि सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको मार्केट से लेनी पड़ती है। तो गांव से मार्केट आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? Generally by cycle. साइकिल। ओके। आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे और जानना है, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं या नहीं हैं, या फिर Yes. हैं तो कितने हैं? उसके There बारे are many tourist places like Baba Kinra Mandir में। and Ghat, Balwa Ghat, and another side Saeed Gaon for famous for sacrifice of farming. One I am forget. I am sorry. ओके ओके, ठीक है। आपके शहर में प्रदूषण और साफ सफाई से रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसी हो जिनको आपको सुधारने की ज़रूरत समझ में आती है? Related to pollution. रिलेटेड टू पॉल्यूशन, साफ सफाई वगैरह? Yes, there is a room of improvement in pollution or garbage
dustbin and establish dustbin along with road, and I think AQI air quality index is poor. गांव होने के बावजूद भी एयर AQI कम है, नहीं, more मतलब than अच्छा 100. अच्छा है या खराब है? खराब, worse, वर्स है गांव में होने के बावजूद। because of stubble warming. ठीक है। अच्छा, आपके शहर से, सॉरी आपके डिस्ट्रिक्ट से टूरिस्ट प्लेसेस जैसे दूसरे शहर में हैं, तो वहाँ के बारे में आपको कुछ नॉलेज है, जैसे वाराणसी? Do not have specific knowledge about Okay. Varanasi. Okay. You told me that there is a Baba Kinaram temple. So related that Baba Kinaram temple, I have a question. Do you believe in religious and just like Hindu, Muslim religions वगैरह? No, I do not believe. Okay. I believe like in the armed forces. आर्म फोर्सेस। ओके, ठीक है। आपको अदर रिलीजन में जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, इसके बारे में अगर आपको डिस्क्राइब करना रहे अपने देश के बेहतर फ्यूचर के लिए या फिर रिलेशन के लिए, तो आप किस तरीके से बताएं कि हमारा देश अच्छा है? Like in Hindu, we worship goddess Lakshmi, Kali. This is a very important thing to show over world. We worship girls, women. ओके। एंड व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स रिलीजन? But in Muslim, व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मुस्लिम्स दैट यू प्रेफर टू शेयर एनीवन? on their occasion they distribute sweet and other things. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके शहर चंदौली और बनारस के बीच में तुलना की जाए, तो आप अपने शहर की क्या फैसिलिटीज़ और गुणवत्ता बताएंगे, और बनारस को किस तरीके से बताएंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं, हमारे यहाँ सही है, अच्छी है, बुरी, कंपेयर कैसे करते हैं आप? Compare in comparison between Ganga pollution. In Banaras, Ganga is very polluted, but in our area, less polluted than another. Okay. Give me any two differences. This is the first difference. Another one. And another one is Chandauli is more village area, so there is unity, but in a city there is less unity. Less unity. Good. आपने अभी तक किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है? Yes, कौन सा? I appeared in NDA exam and I cleared it. और before that? No, I No, only I- appeared in Only you have appeared in NDA competition exam. Yes. Okay. What about the NDA, and why did you appear in NDA exam? NDA National Defense Academy. I want to become army officer from my childhood, so I appeared in NDA exam. Okay. Means it's your dream to appear Yes. To become an army officer. Okay. वहाँ पे गांव के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जैसे आर्मी में जाने के लिए तो लोग रनिंग करते हैं और एग्ज़ाम निकालते हैं अदर देन NDA, तो आपने उसे ना चुनकर NDA को क्यों चुना? Because my inspiration movie is Border. So from my childhood I watch many time. So I got motivation from there. I want to lead a unit like Sunny Deol character. So I day by day my motivation developing, and after that I decided to become officer and lead unit. तो अदर देन NDA से अगर आप जाते तो किस लेवल पे जाते, और NDA से जाएंगे तो किस लेवल पे जाएंगे पोस्ट के नाम में? If I go to NDA, I will go as a lieutenant. If I go Agniveer, I will go as a soldier. ओके, मीन्स आप लीड करना चाह रहे हैं इसलिए आपने NDA को प्रीफर करा। अच्छा, NDA के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले आपको कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़ हुई, जैसे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताइएगा, और फिर आपके आसपास में जो लोग दोस्त रहते हैं, फैमिली रहती है, रिलेशन रहते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू में डिफ़िकल्टीज़ दिखी आपको कि आपको नहीं करना चाहिए? So first of all, financial, I did not experience financial difficulty in my NDA aim. So in my village,
most of people did not know that time what is NDA. एनडीए के बारे में। And my height is less than general. They suggested that time you should go another. There is no eligibility for you joining army. So that time I told I am also eligible for Indian Army officer. So that differentiate between my friend and other related. आपने कहा कि आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड योर फादर इज अ फार्मर, No, my father is a taxi driver. टैक्सी ड्राइवर, सॉरी। देन आपके पिताजी आपको कैसे, कभी प्रॉब्लम होती हो तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए, या फिर आपको जब जब नीड रहे तब तो कैसे आपको Whenever I face difficulty related to financial, I directly go to my father and say he bring from money anywhere from. So he manage. manage from anywhere. So you should first understand what is the financial problem of your father, and you will better experience it in your future life. Yes. And you should know everything. Okay. Next question is, आपने कहा था कि आपकी हाइट कम है, आप बता सकते हैं आप Related to general. जनरल आपकी हाइट कितनी है? 165. 165 सेंटीमीटर। एंड अग्निवीर के अगर आप तरफ से जाते हैं आर्मी में तो वहाँ पे कितनी नीड है? 170. 170। और एनडीए में क्या है? NDA में I think 156. Okay. It is the less demanding height in NDA exam. Yes. How many times do you attempted NDA exam? This is my third attempt. Third attempt. Okay. Why didn't you clear in first 2 attempts? In my first and second attempt, I failed because of my understanding towards UPSC NDA exam and my time management and lacking of my weakness. What was your weakness? English language, English subject, and humanities like history, polity. This is my weakness. I improved this time, and I cleared this. Okay, come back to your next. Why did you not clear? Second, first, second, both for my time management and lack of weakness. Tell me something. 2 key points that you cleared the third attempt. Management, first of all, time management, Okay. and second, persistence. I just want to know about your teaching thinking. What is the thinking of your teaching experience? आप टीचर के बारे में क्या टीचिंग के बारे में क्या सोचते हैं कि पढ़ना ये इसके बारे में क्या है? I think teaching is a noble profession. So I respect all teachers, and I also try to teach my brother and one friend. So in my opinion, teaching is a noble profession. in the अगर world. आपको एनडीए के अलावा टीचिंग में जाना रहे बाई फोर्सली, तब आप क्या करेंगे? तब आपकी राय क्या है? I will go. Go. Okay. And what about your teachers? Tell me something about teachers. They disappointed you, or they appreciated you? They like you? They dislike you? What about that? A lot of teachers taught me. They are very nice. Their teaching techniques is different, and I am not disappointed by anyone. My favorite teacher is Sandeep sir, who taught us more than syllabus, who taught us as a friend more than a strict teacher. So my friend. Okay. आपके टीचर मिस्टर संदीप सर, उन्होंने किस तरीके से आपको पढ़ाया कि बाकी टीचरों से वो टीचर आपको ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे? First of all, he understand about my weakness, and then basis of he taught us. तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जो टीचर आपके चीज़ों को समझ नहीं पाए तो वो आपको डिसअपॉइंट किए होंगे? No, they were teaching all class, so not specific me.
Okay. So Especially for me. this is my Okay. And your Sandeep Yes, sir understand you what is your weakness. And Yes. That's why he's your favorite. Very good. Tell me the situation of a teacher when you are teaching in a class. अभी आपने कहा कि नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ, तो जब आप क्लास में पढ़ाते हैं और आपके साथ कई सारे बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे आप जो सिचुएशन फेस करते हैं तब आप उसके बारे में क्या करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि हमारे टीचर सभी को पढ़ाते हैं तो हमें स्पेसिफिकली टाइम नहीं दे पाए, समझ नहीं पाए, तो आप उस पोजीशन पे होते तो क्या सोचते, कैसे करते, मैनेज कैसे करते? first of all, I have not taught in class. I taught in single. Okay. So Tuition. Yes. Okay. So in my opinion, I a little give everyone, or I try to understand everyone's weakness where they are lacking. ओके, वेरी गुड. आपने जो बोला कि हम सभी बच्चों को कुछ कुछ समय दे सकते थे, क्योंकि आज के टाइम पे टीचर्स की यही प्रॉब्लम है कि टीचर सबको टाइम नहीं दे पाते, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए अदर दैन टीचिंग आप थोड़ा समय दें स्टूडेंट्स को ताकि उनके बारे में जाना जा सके. दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स? अपने दोस्तों के बारे में बताइए. Yes, I have lot of friends, and they always support me, and they always stand behind me. My favorite, my best friend is Manish, Akash, Abhay, and Asu. They are trustworthy, selfless, and always supportive. How did they support you? Uh, when Tell me any one incident. in my study, Abhay supported me very much. When I was in 9th class, I was very weak in physics. So he taught me and he helped me. Okay. And what about the rest three friends? Rest three friends are also supporting my when I failed in first and second exam. So they give me motivation. Okay. Tell me any one incident that you helped to your friends. Yes. Hmm. So one student, one of my friend, his father was died. Okay. So that time I give my 8-10 days in supportive and emotional. Okay. Emotionally you supported him when his Emotionally. father was died. Okay. Next question. Tell me about your extracurriculum activities for daily life. For daily life, Sorry. It's my mistake. Extracurriculum activities in your schools, colleges, anywhere. so in school, I was captain of my cricket team. So and in village I organize Saraswati Puja, and also in school I organize Independence Day and Republic Day event. That taught me leadership lesson and how to keep calm in unfriendly situation. Okay. You like playing cricket. Yes. It means ये आपकी हॉबी हो सकती है. This is games. This is Okay. my Then tell me about your hobbies and interests. my hobby is cooking and exercising, and my interest in watching movie and listening music and exploring podcast. Okay. Which type of food do you cook? किस प्रकार के खाने को बनाते Yes, हैं? I can cook a normal food like curry, potato curry, paneer, and rice, roti, chapati. Okay. Means daily needed foods. I can. रोजाना की. Okay. आपने कहा कि आप मूवीज देखते हैं, तो मूवीज से आपको क्या सीखने को मिलता है? किसी दो की पॉइंट्स को बताइए जिससे आप मूवी देखने से सीखते हैं. I can experience that situation that showing in movie without real experience. We can experience, and we in that
uh, he can get motivation or for anything doing well, and what is right, what is wrong. Okay. Means you learn the experience and situations of how to behave in any kind of situation. Okay, good. Tell me about your educational financing problem. How did you difficult if you faces the financial difficulties in education or not? No. No. Means your father gave support you always. Very good. It's nice to know about your father. Tell me something about your father. My father is taxi driver in Mumbai. In Mumbai. He has been working from since his childhood Okay. because of family financial issue. Okay. He is hardworking and understanding. Okay. What you learn about your from your father? Hardworking. I learned. Hard work. Okay. And understanding. Understanding also. It's a nice thing about your father. Next अरे question. नहीं बोल रहे हैं तो फिर About your family. What is teaching about your family? And tell something about your family. Family, he always supportive for me. He always support. And family, what I think is what they think is. Mean, what you think about your family? How they did their role Yes, towards you? What are the jobs of your family? Yes, How my- many members are there in your family? In my family, 10 members. My mother is a homemaker, Okay. and he is hardworking. He always manage my time, what to do, what to not do. That's I have a younger brother who is currently studying in class 11, and I have grandfather and grandmother, and I have uncle and auntie and 2 cousins. Okay. What you learn about from your grandfather? Grandfather, I learn his experience about life, Uh, can you explain? about culture. In that time, what were being happened in 1917 that time, and I also want learn him to 1971 war. What you experienced that time? Okay. That type of. क्या आपके दादाजी और आपकी सोच में कुछ डिफरेंस है या फिर दोनों की मिलती जुलती है? Yes, there is What are the difference. difference of your? He's a casteist and religious person. Means you do not follow that caste data and I do not follow caste. why? Because of in army said our only caste is army and our religion is serving to country. confirm